Welcome everybody to the Mindful Parenting, a small session where we're gonna understand, we're gonna small tips on mindful parenting, what we can do and how we can help our children blossom. So I will just take few minutes to check that we are live on every channel. We are going live on Insta, we are live on YouTube, we are live on LinkedIn, and we are live on Facebook. So once again, welcome everybody. And today, in continuation from yesterday's talk, कल हमने देखा था that what things we can avoid to help the child boost their confidence. We're going to see how we can help child nurture the confidence. So helping the child build the confidence is a key vital aspect I would say of their personality development. It is a very important part because it helps them, it empowers them to take up different kind of challenges with the resilience and the perseverance, and they can look into that whole situation with positivity. एक अलग सी शक्ति से जब उनमें कॉन्फिडेंस होता है तो एक अलग शक्ति होती है जिससे वो कोई भी चैलेंज जो उनके सामने आता है उसको ठीक से देख पाते हैं, उसको फेस कर पाते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं और उस अपनी पूरी सिचुएशन को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं, समझते हैं. तो ये कॉन्फिडेंस जो है बच्चों में एक बहुत ही की एस्पेक्ट है और वाइटल है, मैं कहूँगी, जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए. अब इसको हम कैसे अपने रोज के एक्शन में क्या-क्या चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं या किस पे हम थोड़ी तवज्जो दे सकते हैं, where we can consider doing, we can be conscious of our actions. I would say what all we can do to become conscious on these particular actions so that we can help child build their confidence. The first is encouraging their interest. So let's understand, we all are unique. आप में एक अलग क्षमताएं हैं, मुझ में एक अलग क्षमताएं हैं, हमारे बच्चों में अलग क्षमताएं हैं और जरूरी नहीं है जो मेरी क्षमताएं हैं वो मेरे बच्चों में भी आ सकती है. जेनेटिक्स हो सकती है और आपको वो एज अ रोल मॉडल दे सकते हैं, वो अडेप्ट कर सकते हैं, पर उनकी एक अपनी यूनिक एबिलिटी भी होती है. और अगर हम उनको एनकरेज करें उनकी स्ट्रेंथ के साथ, तो पहला एस्पेक्ट ये है कि किसी भी एक्शन के थ्रू जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं बच्चों के संग, और मैं बहुत छोटे बच्चों से शुरुआत करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि एडोलेसेंस से शुरू करना चाहिए, बहुत छोटे बच्चों से जब आप शुरू करते हैं तो आप जान सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, व्हाट इज देयर इंक्लिनेशन. if we help them develop their passion from the very young age, we can help them build their confidence. Confidence is such a beautiful feeling, or I would say an emotion, which it fills you with the joy when you have completed certain things what you wanted to. I have started a small artwork और मैंने उसको पूरा कर लिया. I made a nice beautiful flower or a house or a nice scenery as per the age. I fill myself with that joy and which gives me lots of confidence. Yes, I can do this drawing. See, I made it. You must have heard a lot of kids coming up and showing it to everybody. Oh, see what I've done today. See what I've done in my school. They made such small things, but it's something which is giving them, which is building such a beautiful feeling inside them, that energy that they have the capability to do something. They have the capability to perform by themselves. And these small things, when they gain small joyful feelings, it becomes into a big confidence one day. So the first point कि जो उनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे भी है, उनको डांस करने का मन है, उनको म्यूजिक सुनने का मन है, उनको स्टोरी पढ़ने का मन है, उनको खेलने का मन है, उनको आर्ट करने का मन है, जहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट है उनको थोड़ी देर वो कर लेना चाहिए, करने देना चाहिए. So encouraging the interest is the first point to be taken into consideration. और हम सब करते हैं. So whatever we are discussing today, it might be you must be following all these things. It might be just a reminder for you, because in this session जब भी मैं बात कर रही हूँ तो हम उन points में कवर कर रहे हैं ताकि हम अपनी पेरेंटिंग को माइंडफुली रिफ्लेक्ट कर सकें, उस पर सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें. और उसकी जरूरत क्या है, ताकि अगर हम कोई भी पॉइंट पे अगर हम कहीं मिस कर रहे हैं तो उसको हम ऐड करें.
So just check whether you are helping your child by encouraging their interest or not. Second point, praise their effort. जो भी उन्होंने काम किया है, जहाँ उन्होंने हार्ड वर्क किया है, जहाँ उन्होंने डेडिकेशन से काम किया है, उसमें आपका थोड़ा सा प्रेज जो है उनको बहुत encourage करना है. And that encouragement is being received from the parents and from the teachers. It really helps the child to build their confidence. They get a feeling of pride. Yes, I have done something. And that's a beautiful feeling. At times, if you find some mistakes, or I would say not mistakes is a very big word for a child, or small flaws, or it is not meeting your expectations, instead of saying that yes, you have done the hard work, I have seen that, but I have few suggestions, can make a lot of difference. Instead of just saying that, oh, this would have been better if you would do this. So that might be a little harsh for a child to understand like this. But if we start from that, yes, praising their efforts, they get settled. Yes, मैंने कुछ किया और मुझे उसके लिए प्रेज मिली, सबको चाहिए होती है. हम भी आज कुछ करते हैं तो हमको भी प्रेज चाहिए होती है. ये जो सारे पॉइंट्स हैं, हम आज एज अ टॉपिक हमारा माइंडफुल पेरेंटिंग है. बट नाउ तीसरे पॉइंट पे आएंगे, सेट रियलिस्टिक गोल्स. हम अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाए बच्चों के लिए. Normally, it is a very good task to make your goals in team, like, parents बच्चों के संग बनाएं, teachers are doing in their classes, they can make their goals. But let's set up some realistic goals in the small goals. एक एक स्टेप करके हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी हिम्मत दूसरे स्टेप पे चढ़ने की बढ़ती जाती है. हम कहते हैं कि अगर हमको we have to cover up the height in one go, it is not possible. और जब वो हम नहीं कर पाते तो then अगर हमने ऐसा रख दिया कि that, oh, I'll climb the stairs in this many minutes, which is not realistic, it might hurt you, it might frustrate you, it might give you a feeling that you are not powerful enough. So वो जो एक feelings आने लगती हैं which are going towards the negative scene can harm your confidence. So build small goals. Okay, today I will do this much thing, I will do this, small things. I can finish my 2 pages of assignments, or I can do one small artwork. And then by the end of the day, when you realize that, okay, whatever you thought you have finished it, you sleep, you end your day with pride, with joy. That adds to your confidence. So always set realistic goals with the children. Now, fourth point is teach them problem solving. कोई भी problem आती है, give your child enough time, enough chance to solve the problems by themselves. They might take some extra time, but once they do it, they might experiment 2-3 things to solve that problem. But एक बारी कर लेंगे तो वो इनके experience में आ गया. And when they experience that part, how to perform and how to deal with this challenge, it gives them the confidence. Okay, आज मैंने एक challenge किया. They get into the, they welcome the risk with ease, and which is very important, because life cannot be predicted today. No, कि कल कैसे होगा. If they are open and if they know how to take up the task one by one, and they know how to solve the problems, they know how to take up different kind of risk, how to they have those skills to cope up with different kind of challenge, and that comes when they start solving the problems from the young age. Confidence is something which cannot be built कि 18 years हो गए, 19 years हो गए, अब हमें जॉब में जाना है और हमें कॉलेज में जाना है तो अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नहीं, कॉन्फिडेंस आपके बचपन से ही, बच्चे के आई वुड से जन्म लेते ही उसके संग आप कैसा व्यवहार करते हैं और कैसे उसकी राह पे लाइट थ्रो करते हैं, वो उस पे बहुत निर्भर करता है. But it's never too late. You can start today itself. You can give them the suggestions. Okay, ये problem है, ये suggestions है, आप इसको ऐसे ऐसे solve कर सकते हो, and let them take that decision. The fifth point में इसी पे आने वाली हूँ problem solver के पास, कि उनको आप chance दीजिए कि वो कुछ decision making अपने लिए करें.
चाहे वो कितना छोटा बच्चा भी है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, आस्क देम व्हाट वुड यू लाइक टू चूज. It is a big feeling when you choose something, when you perform something according to your choice, and when you complete that thing, it fills you with joy. It fills you with that confidence. Yes, I can do it. And that is all. We need that power in our children. And yes, I can do it. Whatever may, but I can do it. So when they start taking decisions from a very young age, very healthy. It might be, it might sound कि हम कैसे छोड़ दें बच्चे को कि वो सारे डिसीजन नहीं कह रही कि आप उन पे छोड़ दीजिए, बट कोई भी चीज आई है उनको इनफ टाइम दीजिए, सजेशन दीजिए और उनको चूज करने दीजिए. This will help them develop their skill. This will help them develop their confidence that how they can go about to cope up with that particular situation, whatever it may be. So help your child to take their own decisions gradually. हर चीज में आप उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं. जब आप उनके डिसीजन लेते हैं तो उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक अलग भावना आने लगती है. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग भावना आने लगती है तो वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, विच इज अ बिग प्रॉब्लम दीस डेज. व्हेन आई स्पीक टू मेनी पेरेंट्स, दे वुड से कि हर टाइम ना मेरे बच्चे को मेरी अटेंशन चाहिए होती है, वो इंडिपेंडेंट लर्नर नहीं है. और पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है बिकॉज वी आर वर्किंग, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड देन दे आर डिपेंडेंट ऑन ट्यूशंस. So it becomes a totally different story. So independent learner बनाने के लिए भी हमें उनको responsible बनाना है और उनको ये decision making उनको धीरे धीरे ये idea उनको ये coping skill उनको देने जैसी है. Now coming to the next point is that we celebrate their mistakes, making the child feel that मिस्टेक्स भी वही लोग करते हैं जो कुछ काम करते हैं. इफ आई गेट scared and don't do anything, definitely I will not make any mistakes. होगा ही नहीं कुछ. अगर मैं कुछ करूंगा तभी मिस्टेक्स होगी ना. And mistakes are always an opportunity to learn something. A mistake is a very big word, huh? As a parent, if I say mistake, it may be something which is not as per my expectation, and I can call it as a mistake. Teacher can call it as a mistake if it is not as per the teacher's expectations or something. Class के rules के accordingly नहीं हुआ तो is a mistake, right? But if we communicate to the child in a way that, okay, it is like mistake is a word whenever any elder is saying is they are trying to give you an idea of how they understand the thing. I am calling, मैंने अपनी बेटी को बोला कि ये मिस्टेक है, तुमने ये गलत किया है. अब मेरे मुताबिक नहीं था इसलिए मैंने गलत बोला. बट अगर मैं उसको ये समझा देती हूँ कि जब मैं गलत कह रही हूँ तो मैं अपना आइडिया भी बता रही हूँ तुमको कि मैंने कैसे सीखा. So it is sort of a learning opportunity for a child to understand my method. So this, if I communicate openly to the child that it is the way to learn somebody else's method, whether it is parents or whether teachers' parents, what they have learned from their life. So the child would become very open. And they really learn well looking at their models. और बच्चों के मॉडल्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होती हैं. तो यही आपका जो अराउंड बच्चों के संग होता है वो सब कुछ वहीं से सीखते हैं. दे एब्जॉर्ब थिंग्स. सो मिस्टेक्स आर वेरी गुड फॉर देम. We need to tell them that it is not something negative if you're making mistakes. More mistakes you make, more opportunities for learning. The only thing is to remember, one mistake done once and understood, it's better not to repeat it again. So this also we need to communicate. Coming to this, अब mistakes में हमने understand किया कि हमने उसको mistake का उनको मतलब ही अलग तरीके से समझाया कि एक opportunity है जहाँ वो मेरा experience सुन रहे हैं या parents का या teachers का सुन रहे हैं.
So effective communication is a very important role in building up the child's confidence. कैसे हम उनको वोकैबुलरी हम कैसे बच्चों के संग यूज कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, या हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ताकि उनको वीक करने के लिए। जो वोकैबुलरी है, जो हमारा कम्युनिकेशन लेवल है, उससे बहुत निर्भर करता है कि उनकी डेवलपमेंट कैसी होगी। So this is something very important for us to understand, that the effective communication needs to be done and understood, so that we can help the child to understand things in a positive way, in the growing mindset, in the way of, like, in the we're talking of the vocabulary of the growing mindset, where they are open to learn, where they are open, flexible to learn. So we'll go in detail with the flexible mindset and the rigid mindsets, or the growing mindset or the fixed mindsets, how we can change that also, and it can easily happen with the help of communication. The next point is lead by example. Again, it was saying कि आप सबसे ज़्यादा रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, आप हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो I always recommend parents to share your stories with children. Make it a point कि आप अपनी लाइफ की स्टोरीज बच्चों को बताएं, और कैसे आपने कोई चैलेंज आया उसमें आपने उसको कैसे कोप किया और उससे उभरे। We all have bundles and bundles of instances where we have dealt with different kind of challenges, and it has helped us to build ourselves, our personality. So it is very important for us if we share them. That is something like, we are sharing with them the cooked meal. And the children can easily digest that. और डाइजेस्ट करके उनको एब्जॉर्ब हो जाता है, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। They know that skill, okay, this is the experience skill of my father. उनको एक स्टेप उससे ऊपर चढ़ेंगे वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। So it is very important for us to, share our stories. And sometimes, you're tired of sharing your stories, you can share the stories of various people, how they have been successful, how they have dealt with different kind of the problems and challenges, so that they get that kind of a learning in terms of the examples, in terms of the stories. बहुत help करता है बच्चों। Coming to this physical activities, it is very important to keep up these chemical happy hormones alive in our body, and do various kind of physical activities. So the energy movement within ourselves remain positive. The oxygen level inside our body remains at a good level, which keeps the functioning of the brain at an optimum level. तो ये सारी चीज़ें बड़ी साइंटिफिक हैं, उसको हमें कैसे मेंटेन करना है, और ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे मेंटेन करना है. दिस इज physical activity is a very important part of it, and we should encourage children to participate in an outdoor activities, running hai, koi game khelna hai, whatever it is, because when you are playing, you get to learn various kind of things. You get to learn how to take up the challenges, you get to learn how to take up the risk, and you sometimes encounter your own fears, and when you bypass your fear, and then you are just spurred with different kind of a courage, and then you want to do it again. So there's a lot of learning which happens when they are participating in their physical activities. So it is very important वो करेंगे, और हर कोई चीज जो बच्चे कर रहे हैं वो अगर अपने एक्सपीरियंस से जानेंगे तो वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगा. लास्टली, वी हैव टू एनकरेज देयर सेल्फ एक्सप्रेशन, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें. Me being an artist and art therapist, I always recommend that the art is the easiest way for a child to self-express. From the very younger age, I recommend children to keep up their journals and express themselves in a beautiful way, whatever comes to you, however you want to express. And I do have a lot of data on the different channels of mine where you can use it to encourage the children to take up different things. We have this AMBA art club also, where we go every day and give up a new technique, how to make a different kind of art. So there are a lot of things
on the platform which you can use it and which are free of cost, and help your child express themselves through art. कोई डांस के संग करना चाहता है, कोई म्यूजिक के संग करना चाहता है, तो वो भी बहुत अच्छा मीडियम है। पर किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें, ओपननेस से के साथ मूव करें। So these were the few points, few pointers, I would say, and which are listed in the in the caption area also. Plus, you would get an artwork tomorrow morning on all the media. I would suggest all the parents to do their self-reflection. आप सब कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे होंगे, बट मैं सिर्फ एक सजेशन है मेरा, यहाँ आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए, कहीं पे भी कमी लग रही है तो उसको हम सुधार सकते हैं। एंड अब इस टाइम इस चीज की जरूरत है, वी ऑल नीड टू come together to bring up the mental wellness of our children and to reduce the kind of things which are happening all around due to stress and anxiety amongst the children. And I think so we all, if we take a small step और अपने घर में ही हम अपना करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत चेंजेस हम ला सकते हैं। And that's all I would like to say. And I have taken up this 1 month thing to come live every day at 9 p.m. We'll take up different topics. If you have any suggestions, you can send me. And if you want something from us, some worksheets or some other things, you can put it in the comment box. We'll share the PDF with you. And that's it. I'll see you tomorrow evening at 9 p.m. now. Take care till then. Enjoy. Happy weekend. And